तेजल 11 दिवा कोलीवाड़ा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पर टेनिस क्रिकेट के किलर मिलर ओमी केनी और उनके साथ तुषार पाटिल। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे तुषार। खेल की शुरुआत होती हुई वेले टीम की तरफ से कुलदीप थले को मोर्चे पे लगाया गया है। स्वागत है आप सभी का मध्य रात्रि के बाद। पहली गेंद पुल करना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से निकल गई, अब जाकर वाइड घोषित किया। अंपायर ने 1 रन से खाता खुला तेजल 11 दिवा कोलीवाड़ा का। कल 9 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। 9:15 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे रेगुलर ग्रामीण क्रिकेट के मैचेस की शुरुआत होंगी। कुलदीप थले बढ़िया बॉलर बैक ड्राइव, कमाल की फील्डिंग, रन नहीं लिया वहां पर। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट रहा वहां पे मिड ऑन पे अनिकेत का। 1 रन बिना किसी विकेट के मुकाबला चलता हुआ तेजल 11 दीवा कोलीवाड़ा बनाम जय काफरोबा वेले के बीच में। अगला मैच अजय जरा अनाउंस करना है, आज का आखिरी मैच। खींच के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद जाकर शरीर से टकराई है, कोई रन नहीं। चांगली गोलंदाजी मैदानावरती, पहिला चेंडू वाईड नंतर स्वतःला सावरलं, एक्सलंट फिल्डिंग आणि चांगलं कमबॅक मैदानावरती। फक्त एकच धाव, बिनबाद हलवार सुरुवात। कुलदीप थले कुलदीप इस मरतबा ऑन ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी है, गेंद डीप में गई है। इस बीच 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पे पहुंचा है तेजल 11 दीवा कोलीवाड़ा का। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कुलदीप थले। कुलदीप थले सामना करेंगे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच तुषार पाटिल। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है। इस बीच कैच छूटा है, सपना टूटा है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। तेजल 11 दीवा कोलीवाड़ा बल्लेबाजी कर रही है, वेले की टीम फील्डिंग कर रही है। वेले क्रिकेट में बड़ा नाम है ग्रामीण क्षेत्र में। स्वर्गंगा डेकोरेटर्स हे प्रोप्रायटर त्यांना विनंती आहे की आपण दयानंद दादांशी संपर्क साधायचा आहे। स्वर्गंगा डेकोरेशन प्लीज संपर्क साधायचे दयानंद दादांशी, थँक्यू। कुलदीप थले बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछालता, बीट किया वहां पे। कमाल का अब तक ओवर चल रहा है कुलदीप थले का मैंडेटरी पावर प्ले में। कुलदीप थले
राइट आर्म ओवर द स्टम्प जा रहे हैं। कटर थी, कमाल की गेंद, हाथों के पीछे से उंगलियां फेरी थी, बल्लेबाज को चकमा देकर निकल गई विकेट कीपर के पास। व्हाट अ बॉल, फेयर अमाउंट ऑफ स्विंग इन द एयर, एंड ऑफ द सरफेस। कमाल का ओवर खत्म हुआ। एक ओवर की समाप्ति, धीमी शुरुआत फिर से तेजल 11 दिवा कोलीवाड़ा की। कुल रन है 4 बिना किसी विकेट के। चांगली गोलंदाजी मैदान होती। पहिला चेंडू वाईट पाहायला मिळाला, नंतर मात्र सुंदर कमबॅक केला. वंडरफुल कमबॅक, ट्रिमेंडस प्रेशर, एक्सलंट फिल्डिंग आणि तेवढेच चांगली गोलंदाजी. स्पेल राहिला चांगला मैदान होती, ब्रिलियंट स्पेल. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर फॉर विदाउट लॉस. दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द बॅट्समॅन. एकच 4 धाव धापालकावरती. एकही चौकार षटकार नाहीये सिद्दीक सर आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय आणि 5 मिनिटं झालीत. अजूनही तुमच्याकडं 4 षटकं फेकायचे आहेत. 5 षटकाचा सामना, चांगला सामना आहे. मागे दोन्ही संघांनी चांगला संघर्ष करत सामना जिंकलाय, त्यामुळे हा सामना देखील चांगला होईल आपण अपेक्षा बाळगूया. टॉस जिंकून तेजल दिवा कोलीवाडा संघानं फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. मात्र तो निर्णय पहिल्या षटकामध्ये चांगला ठरला नाहीये. गोलंदाजी कुलदीप तरीची चांगली झाली. अचूक टप्पा, दिशेवरती नियंत्रण, भेदत दाखवले, एक्सलंट फिल्डिंग, ट्रिमेंडस प्रेशर, वंडरफुल कमबॅक अँड इट्स ब्रिलियंट स्पेल राहिल्या मैदानात. 4 धाबा बिनबास्ते त्यामध्ये पाहतोय. चांगली स्पर्धा सुकेश डाके आमच्या आणि निलेश पाटील यांच्या माध्यमातून एवन जोडी, एवन शो आपण पाहतोय. संपूर्ण सिद्दीक सर आपण पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकच चर्चा एवन जोडीची आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या स्पर्धेची चर्चा आपण पाहतोय. नवीन कोणाचा सज्ज होते भावेश पाटील येत असताना सायकलला डावकर फलंदाज ओमकार केनी. ओमकार मागच्या सामन्यामध्ये देखील संयम बाळगला, नंतर मात्र अटॅकिंग फलंदाजी केली. त्याच्याकडे असला अनुभव दाखवत असताना फुटवर चांगला आहे, कडी नजर आहे, बॉडीचं बॅलन्स चांगला असतं. P1 P2 मध्ये चांगली फलंदाजीसाठी, मोठ्या फटक्यांसाठी पिच हिटर म्हणून त्याची ओळख आहे आणि तो फलंदाज मात्र स्ट्रायकरला. डावकुरा फलंदाज अत्यंत घातक, अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये भावेश आलाय. चला वेळेचं बंधन आहे, 5 मिनिटं घेतलेलं आपण पहिल्या षटकासाठी. आता एक्झॅक्टली वाजलेच ते 2:34 मिनिटं झालीत. प्रेक्षकांची अजून गर्दी आहे. युट्यूबला देखील भरपूर प्रेक्षक जीटीच्या माध्यमातून एन्जॉय करतात. स्वागत आहे तुमचं देखील. 6 मिनिटं झालीत, लक्षात असू द्या. अत्यंत धाडसी निर्णय तेजल दिवा कोलीवाडा संघाने घेतला. डावकुरा फलंदाज चेंजेस हवेत गोलंदाजाला, विकेट किपरला देखील भरपूर चेंजेस हवेत फिल्डिंगमध्ये. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक बाबे सर आमचे गुरुवर्य, त्यानंतर आमचे IPL कॉमेंटेटर कुणाल दाते सर, मखमली आवाज, त्यानंतर आमचे सदाबार कॉमेंटर अजय घरत आमच्या समेत आणि आमचे मुकादम स्कोरर ॲज अ स्कोरर चांगली भूमिका निभावत असताना. टप्पामध्ये चेंडू खाली राहिला, डाऊन द लाईन केल्याचा प्रयत्न, डॉट डिलिव्हरी, पंचांचा नो बॉलचा इशारा. मेरे ख्याल से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए नो बॉल दिया गया है। अंपायर के दाईं ओर 3 खिलाड़ी थे। स्पर्धा फार मोठी आहे, स्पर्धेचा दर्जा चांगला आहे, त्यामुळे प्रत्येक संघाला इथे वाटतं की आपण जिंकावं. कारण प्रेक्षक मगाशी कोणा सरांना चांगला उल्लेख केला की प्रेक्षकांना देखील वाटतं की आपण इथे जाऊ नये. आम्हाला देखील वाटतं आम्ही सातत्याने समर्थन करावं, का तेवढी चांगली स्पर्धा आहे, सोडण्यास मन करत नाहीये. एवढा चांगलं दर्जाचं आयोजन आपण पाहतोय. बात 1933 की थी, बॉडी लाइन जो सीरीज हुई थी जब ये निर्णय लिया गया था. 1933 चा रेकॉर्ड सांगितलाय बघा. येस, स्वर्गंगा डेकोरेशनचे प्रोपायटर, पुन्हा एकदा विनंती आहे तुम्हाला की दयानंद दादाशी आपण संपर्क साधायचा आहे, की उद्याच्या काही सूचना आहेत तुमच्यासाठी. येस, पंच सांगत असताना सामना सुरू होतोय. फ्री हिट, येस, नो बॉल. धावसंख्येमध्ये यालीमध्ये वाढ होणार, 4 धावसंख्या होती ती मात्र 5 वर जाणार, कारण नो बॉलचा इशारा. चांगला चेंडू होता, खाली राहिला, डाऊन द लाईन, ऑन साईडला घेण्याचा प्रयत्न, अनएक्सपेक्टेड डिलिव्हरी, डॉट डिलिव्हरी, मात्र नो बॉलचा इशारा. पंचांकडे फिल्डिंग रेस्ट्रिक्शन मध्ये काहीतरी बदलाव. ऑन साइडला टर्न केल्या चेंडूला दिशा दिली, करत विकेट. एक्झॅक्टली स्क्रीन समोर एकदा पुढे केले, थोडासा फंबल, उचलला चेंडूला मात्र फेकलं, तो मात्र गोलंदाज एंडला. रन पिकअप, गॅदर, ग्रीप अँड थ्रो याच्यामध्ये वेळ गेला, त्याचा फायदा घेतलाय. 2 धावा धापलकावरती, 1 धावा कधी 7 आपण पाहतोय. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, काय सामना रंगला मागचा. बरोडी वर्सेस आपण पाहिला सूर्य यांच्यामध्ये. मागचे सामने देखील फार चांगले रंगले. आजचं क्रिकेट चांगलं राहिलं, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी राहिली या स्पर्धेमध्ये कालपासून. जशी जी स्पर्धा पुढे जाईल तशी प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी तुम्हाला पाहायला मिळणार. क्रिकेटचा दर्जा उंचावत असताना भावेश पाटील, शॉट ऑफ प्लेन, हाफ ट्रॅकर, चांगला फटका सजवलं, मात्र याली पुल करत असताना सक्सेसफुल स्कोर ऑफ द विकेट. दैट्स अ 6 माइटी हिट. बन गए किलर मिलर. आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था
हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा, फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल चाबुक शॉट, 6 रन. ओमकार केने तुम्ही हाफ ट्रॅकर म्हणजे करू शकत नाही, कारण ओमकारमध्ये ताकद आहे, त्याच्यानंतर मनगटी ताकद जास्त आहे, फुटबॉलचा वापर चांगला करतोय, बॅकलिपला लवकर या मध्ये पिक करत असताना खूप चांगली ताकद दाखवत असताना मनगटी ताकदीचा वापर करत असताना चांगला शेवटी भिरकावून रेस करतोय विकेट आणि षटकार दाखवत असताना. चला फिल्डिंगमध्ये जेवढ्या लवकर शकेल तेवढा सामना सुरू करूया आपण. प्रेक्षकांची गर्दी अजूनही भरपूर आहे. भाविक सर, ऑलराऊंडर आपण पाहिलं, ओव्हरऑल पाहिली स्पर्धा खूप चांगली स्पर्धा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फक्त एकच चर्चा, ती मात्र A1 जोडीची, आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या स्पर्धेची पंचायती राज ट्रॉफी 2024ची आपण स्पर्धा पाहतोय. कपिल पाटील साहेबांच्या सन्मानासाठी स्पर्धा आपण पाहतोय. तर कपिल पाटील साहेबांचं काम भरपूर आहे, कार्य भरपूर आहे. मागच्या कित्येक वर्ष खासदार की 3दा ते खासदार निवडून आलेत. यावेळी आपण पाहतो की आगरी समाजाचा बहुमान म्हणून त्यांना मंत्रिपद मिळालं. आणि पहिली मोठी गोष्ट आहे, पंचायत राजची सुरुवात 1966ला झाली होती आणि त्या पंचायत राजचे ते सध्या मंत्री आहेत. ही एक अभिमानाची गोष्ट आमच्यासाठी. फरक धाबा आल्यात त्या 13 बिनबाद सुरुवात. आता मात्र धाबा आल्यात पहिल्या षटकामध्ये 4 धाबा, इकॉनॉमी गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. या षटकात धाबा आल्यात मैदानावरती. एक षटकार आपण पाहिलाय, अटॅकिंग बॅटिंग ओमकार केनी. ग्राउंडिंग झाली बॅट, मात्र झंझनाट लागला फलंदाजाला, कारण चेंडू चांगला चेंडू होता. याले फुलर अँड डिलिव्हरी, फलंदाज ऑन साइड त्याच्यानंतर बीट झालाय आणि बॅट मात्र ग्राउंडिंग झाली. गुड डिसिजन बाय अंपायर, डॉट डिलिव्हरी. 13 धाबा, वंडरफुल कमबॅक भावेश पाटील आफ्टर 6. एखादा षटकार मारल्यानंतर गोलंदाज किती लवकर कमबॅक करू शकतो हे दाखवले मैदानावरती. ग्रेट बॉलिंग, वंडरफुल कमबॅक, एक्सलंट बॉलिंग. ओ, बॅटचा फेस लवकर ओपन केला, फुटबॉलचा वापर नाहीये, जाग्यावर नाचवल्या फलंदाज, फिंगर रोल केले होते आणि समोर ठेवला चेंडू फलंदाजाला, यावेळी नाचवल्या फलंदाजाला. गुड बॉलिंग. भावेशने षटकार मारला, घरा स्क्वेअर ऑफ द विकेट. मात्र तदनंतर 2 चेंडू बीट केले मैदानावरती. चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय. दोन्ही संघाचा ड्रेस कोड देखील खूप चांगला आहे. ब्ल्यू वांगी कलर तुम्हाला पाहायला मिळतोय, एका बाजूवर राणी कलर पाहायला मिळतोय. एक खेळाडू आपण पाहतोय नॉन स्ट्रायकिंगला सध्या तुषार पाटील, येलो कॅप, मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय तो मात्र नॉन स्ट्रायकिंगला. गुड बॉलिंग भावेश पाटील, वंडरफुल कमबॅक. फुलर अँड डिलिव्हरी, ड्राइव्ह केला, बॉल ड्राइव्ह होता, चांगला फटका along the carpets in front of the screen and that's a mighty hit. That's a 4 runs. लगभग सिद्धिविनायक अंजूर क्रिकेट ग्राउंड की घास को आग लगाता हुआ शॉट. क्या शॉट खेला है, कमाल का स्ट्रोक. पिक्स ऑन द हाफ वॉली and firmly driven wide of the straight long all the way to the boundary for 4. नास्टली ड्रिवन, जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी. हा फलंदाज ऑन साइडलाच नाही खेळतो, ऑफ साइडला देखील खेळतो, दाखवलं त्याने मैदानावरती. ग्रेट बॅटिंग, लवकर पिकअप केला, ऑन साइडच्या डोक्यावरला लॉंग ऑनला बिरकवून दिला, चेंडू सीमा पलीकडे. व्हॉट अ कनेक्टिंग, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, दॅट्स अ 6. देखिए ओमी केनी जो है, इनको आप जल्दी आउट करो तो ठीक है, वरना ये मैच लेके चले जाते. क्या शॉट खेला है, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया है भावेश पाटिल को. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4च धाबा, या षटकामध्ये तब्बल धाबा कुठल्या त्या फार मोठ्या 21 धाबा आल्यात मैदानावरती. अप्रतिम फटकेबाजी. भाविक सर, असं म्हटलं होतं की पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजांचं वर्चस्व नव्हतं, फक्त गोलंदाजांचं वर्चस्व दाखवलं आणि दुसऱ्या षटकामध्ये फलंदाजांना वर्चस्व दाखवलं. आणि ओमकार केनीला थांबवणं फार कठीण आहे, कारण ओमकारचा स्टान्स, त्याची फटकेबाजी, त्याचं बॉडीचं बॅलन्स आणि त्याची कडी नजर, त्याचं शॉटचं सिलेक्शन अप्रतिम राहिले मैदानावरती. मागच्या सामन्यामध्ये देखील हा फलंदाज पहिल्यांदा शांत राहिला, नंतर मात्र त्यानं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि धाबा कुठल्या होत्या मागच्या सामन्यामध्ये देखील. 12 मिनिटं झालीत, लक्ष असू द्या. 2 षटकांसाठी 12 मिनिटं. जर 20 मिनिटांमध्ये तुमची 4 षटकं पडली नाहीत तर शेवटच्या षटकामध्ये फक्त 4 खेळाडू सीमा लगत असतील, एक खेळाडू तुमचा आतमध्ये असल्याची नोंद घ्या आपण. कारण आमच्या मुखात आम्हाला सातत्याने माहिती देत असताना कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे गुरुवर्य सन्मान्य 28 वर्षाचा का अनुभव असणारे आमचे 12 GB कॉम्प्युटर आमचे कॉमेंटेटर सन्माननीय सिद्दीक बाबे सर आम्हाला जॉईन झालेत. IPL कॉमेंटेटर कुणाल दाते सर आमच्या समवेत, सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत आमच्या समवेत आहेत. 6व्या रात्रीमध्ये आपण पाहतोय डे नाईट फॉर्मॅटची स्पर्धा आपण पाहतोय. 128 संघ, 15,000 पेक्षा जास्त खेळाडू, 1536 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये. ओ व्हॉट अ टुर्नामेंट. कुलदीप यावेळी सॉफ्टहँड फलंदाजानं मात्र तुषारनं जागा बनवली एक सिंगलसाठी. तुषारला माहिती आहे ओमकार यांनी सध्या चांगला फॉर्ममध्ये आहे, त्याला आपण बॅटिंगला स्ट्राईकला आमंत्रित केलं पाहिजे. सेन्सेबल क्रिकेट मैदानावरती
आणि सिद्दीक सर आपण नेहमी पाहतो की फलंदाज एखादा फलंदाज अटॅकिंग स्टान्समध्ये असेल त्याला तो रिदममध्ये असेल तर त्याला स्ट्राईक दिली पाहिजे आणि दाखवले सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावरती तुषार पाटीलनं. ओमकार केने 19 रन खेळतोय 10 चेंडूचा सामना केला अटॅकिंग फंच करत असताना तो फटका त्यानं जो सजवला लॉंग ऑफला मगाशी तो चौकार लावला ना अक्षरशः आग लावत गेला होता. नास्टली ड्रिवन सुपर बॅटिंग असे फटके पाहण्यासाठी आम्ही देखील तरसत असतो. अशा फटक्यांची नजाकत पाहण्याचं क्रिकेटचं सौंदर्य आणि क्रिकेटचा स्टँडर्ड किती उंचावलाय ग्लॅमर किती आलंय हे पाहायला मिळतं मैदानावरती. अटॅकिंग फटका ऑन साइडला जज करतोय फलंदाज बाद ॲब्सोल्युटली गॉन. ओमकार केने इट्स वॉकिंग बॅक प्राइज विकेट मैदानावरती. देखिए क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी चलता है. मैं सराहना करूंगा कुलदीप थले की. ओमकार केनी को उनका फेवरेट शॉट खेलने के लिए गेंद दी, लेकिन जो जाल बिछाया था ट्रैप उसमें फंस गए ओमी केनी. सिंगल जल्टी वेमेन रिचर्ड कहा करते थे कि अगर बल्लेबाज को आउट करना है गेंदबाजों को तो उसको कम से कम लगातार 3 गेंदें वहीं की जाए जो उसका फेवरेट शॉट है. क्या बात आहे. हेच तर आम्हाला शिकायला मिळते सिद्दीक भाई से तुमच्याकडनं. 24 धावा एक पास त्यामुळे पाहतोय चांगला अनुभव आहे सिद्दीक सरांकडे. 1000 पेक्षा जास्त टुर्नामेंट कव्हर केल्यात. मला आठवते विलास साहेबांनी तुमचा सन्मान केला होता तो आम्ही कधी विसरणार नाहीये. विलास सारनं प्रतिभा इव्हन ट्रॉफी आम्ही 2016ला ती आम्ही कव्हर केली होती. त्यानंतर भाविक सरांना आम्ही पाहिलं त्या स्पर्धेमध्ये 25 वर्ष त्या स्पर्धेमध्ये सातत्याने समालोचन केलं आणि या वर्षी मागच्या वर्षी 26 वर्ष कंप्लीट केली. क्या बात आहे. 24 धावा एक पास त्यामध्ये पाहतोय चांगली गोलंदाजी कारण कुलदीप तलेनं पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा दिल्या होत्या. डिसिप्लिन गोलंदाजी दाखवली होती, अनुशासित गोलंदाजी दाखवली होती. कंट्रोल आहे त्याच्याकडं, शोल्डरचा योग्य वापर आहे, अचूक टप्पा आहे, ॲक्युरेसी आहे, परफेक्शन अनुभव आहे त्याच्याकडं आणि त्या अनुभवाचा साठा वापरला त्यानं या गोलंदाजीमध्ये. चांगला धक्का दिलाय, मोठा धक्का दिला मैदानावरती. ओ थोडासा बॅकफुटला गेला, एज लागले मात्र नाहीये. वाचलाय मैदानावरती फलंदाज. स्ट्रॉंग अपील, उत्साह जास्त आहे खेळूंचा कारण आपण पाहतो की पॅशनेट प्लेअर तुम्हाला पाहायला मिळतात. जोशील खेळू तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या संघामध्ये. नवतरुण खेळूंचा भरणा जास्त या संघामध्ये, त्यामुळे तुम्हाला पॅशनेट प्लेअर जास्त पाहायला मिळतात. जोश जास्त हा या संघामध्ये. चांगली गोलंदाजी, वंडरफुल कमबॅक, वन सेकंड एक्सटर्न बॉलिंग अँड ब्रिलियंट स्पेल फ्रॉम द कुलदीप थले. गुड बॉलिंग. ओ ऑन साइडला खेळायचा होता मात्र ऑफ साइडला आला. लॉंग आपला जज करतोय सुमित. दुसरा जेल टिपलाय मैदानावरती. फलंदाज बाद दुसरा धक्का 24 वरती दुसरा धक्का भाविक सर. दुसरा धक्का मैदानावरती 24 वरती 2. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. इंटरनॅशनल लोक 10 स्टँड आपण पाहतोय. 7 कॅमेऱ्याच्या माध्यमाने जीटीच्या माध्यमाने स्पर्धा कव्हर केली जाते आणि जीटीचे फाउंडर मगाचे जेपी देखील आले होते. जलपेश भोर देखील आले होते मंचावरती. सिद्दीक सर ओव्हरऑल ही स्पर्धा आपण पाहिली तर खूप चांगली स्पर्धा, मजा येते या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्यासाठी कारण प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी असते. डिसिप्लिन आहे या स्पर्धेमध्ये, ट्रान्सपरन्सी आहे तुम्हाला पाहायला मिळते, डेडिकेशन तुम्हाला पाहायला मिळतं. त्यानंतर आपण रिॲलिबिलिटी पाहतोय आणि कन्सिस्टन्सी सातत्य स्पर्धेचा आपण पाहतोय. मागच्या कित्येक वर्षांमध्ये स्पर्धा ह्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. 19 बाईकनं सुरुवात केली. मागच्या वर्षी आपण पाहिलं 26 बाईक आणि या वर्षी मात्र 32 बाईक. हा फक्त विक्रम करू शकते ही आमची A1 जोडी निलेश पाटील आणि आमचे सुकेश डाके यांच्या माध्यमामध्ये स्पर्धा आपण पाहतोय. गुड बॉलिंग, वंडरफुल कमबॅक वन्स अगेन कुलदीप तले. रिवाशच्या माध्यमातून वाटतं कनेक्टिंग. हो इनक्रेडिबल शॉट, अमेजिंग अँड ब्रिलियंट, अनबिलिव्हबल. दॅट्स अ 6. केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनझोडीचा. केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनझोडीचा. थँक्यू डीजे. भाविक सर काय म्हणाल, ज्या गोलंदाजानं आतापर्यंत अटॅकिंग गोलंदाजी दाखवली त्या गोलंदाजाला रिवर्सच्या माध्यमातून एवढा चांगला फटका, काय सांगाल? कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो ना तो टेढ़ा करना चाहिए. क्या बात आहे. शॉर्ट अँड स्वीट कमेंट दिली. 30 धावा धापलकावरती 2 धक्के दिले मैदानावरती. चांगली धावसंख्या आता म्हणता येईल तर 30 षटक मार्क असता. फायनल ड्यूटी ऑफ द थर्ड ओव्हर. ओ पुढे ठेवला चेंडू, खाली राहिल्यानंतर यावेळी फलंदाज फक्त चेंडू टर्न करायचा होता, नाही जमला तर ड्रिल करतोय. एक्झॅक्टली सच अ गुड फिनिश, वॉट अ डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी अँड दिस इज अ फिनिश, गुड फिनिश. कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओव्हर्स, 30 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करत असताना तेजल दिवा कोलीवाडा संघ आयोजकांचा मनापासून आभार व्यक्त करते. सुकेश डाके, निलेश पाटील यांनी यावर्षी देखील आम्हाला स्पर्धेमध्ये आमंत्रण दिलं. सिद्दीक बाबी सर आपले देखील आभार व्यक्त करतोय. तुम्ही देखील आम्हाला चांगलं सांभाळून घेतलं, या स्पर्धेमध्ये आम्हाला सहकार्य केलं, तुमचं देखील मनापासून स्वागत करतोय.
17 मिनिटं घेतली तुम्ही 3 षटकांसाठी. अजूनही 2 मिनिटं तुम्ही मागे आहात. हे लक्ष असू द्या. 3 मिनिटात तुम्हाला षटक फेकायचं आहे. चौथं याची आपण दक्षता बाळगा. 29 2 बास्केट आपण पाहतोय. कुणाल सरांनी देखील चांगले रंग भरलेल्या स्पर्धेमध्ये IPL कॉमेंटेटर ऐकू शकाल. त्यांची कॉमेंट तुम्ही येणाऱ्या IPL मध्ये टाटा IPL यावर्षी. त्यानंतर आमचे सदाबार कॉमेंटर अजय घरे देखील या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण जीव लावून कॉमेंट करत असताना आणि सिद्दीक बाबे सरांचा प्रश्नच नाहीये. संपूर्ण जबाबदारी या स्पर्धेत स्वीकारत असताना ॲज अ कॉमेंटेटर त्यांच्याकडे वही देखील मी पाहिली, नोटबुक देखील पाहिली. प्रत्येकाची नोंद आहे त्यांच्याकडं. हे देखील आम्ही आवर्जून पाहिलं. गुड जॉब सिद्दीक सर, कीप गोईंग. 30 धावा 2 बास शेवटच्या 2 षटकं. गोलंदाजी परिवर्तन. अनिकेत पाटील याला फ्रेश गोलंदाज. उरती विकेट. ओ चॉप केल्या शेवटच्या मुवमेंटमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. गुड फिल्डिंग. शॉट टर्मॅनला धनराज दाखवत असताना डॉट डिलिव्हरी झाली असते मात्र नाही. चॉप केला शेवटच्या मुवमेंटला. चेंडूला एकच धाव मिळणार. एका धावसेकंद आकार 31 धावसेकंद पाहतोय. स्मार्ट क्रिकेट होता हुआ बहुत बढ़िया वाइड यॉर्कर थी. छोटी बैकलिप से चॉप बहुत अच्छा किया था, लेकिन गली में कमाल की फील्डिंग. कहीं ना कहीं तेजल 11 की कठिनाइयां बढ़ती हुई, क्योंकि वो टोटल नहीं है जो उन्होंने चाहा था. हो निश्चित अगदी आपलं म्हणणं रास्ते की जर टॉस जिंकला तर फलंदाजी स्वीकारली. त्यांना माहिती की आपण 60-65 पर्यंत पोहोचू, मात्र नाही जमलं. आता अजूनही वेळ आहे त्यांच्याकडं. अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ पर्याप्त आहे. 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. 4थ्या षटकाला प्रारंभ झाला. 1 चेंडू संपलाय आणि धावसेकंद आपण 31 2 बास्केट आपण पाहतोय. मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा होती जेव्हा केनी मध्ये खेळत होता. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं रिवर्सच्या माध्यमात फटका आपण पाहिला. तुषार अजूनही मैदानावरती मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मान कटलेला फलंदाज गिरीश ठाकरेंना लवकर पिक केली. टॉपेज लागलाय. यष्टीरक्षक चेंडू खाली. फलंदाज बाद. भावेश पाडी चेंडू खाली. अजून एक धक्का मैदानावरती आणि 30ा धक्का मैदानावरती. सिद्दीक सर तीनही फलंदाज स्कॉट आउट झालेत मैदानावरती. कॅचच्या माध्यमात आपण पाहिलेत. आतापर्यंत 3 धक्के दिलेत आणि चांगला जल टिपला विकेट किपरनं. 31 वरती 30ा धक्का मैदानावरती. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज येत असताना रोनित मडवी. 31 धावा 3 बाद. सिद्दीक सर तुम्ही अगदी चांगलं म्हटलात की 50-60 पर्यंत पोहोचायची इच्छा होती या संघाची, त्यामुळे फलंदाजी स्वीकारली. मध्ये तसं काही चित्र आता मला पाहायला मिळत नाहीये, कारण गोलंदाजी पुन्हा एकदा अटॅक व्हायला लागला. चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं आतापर्यंत. कोणत्याही चुका नाही क्षेत्ररक्षणामध्ये. मात्र मी कौतुक करेन तुषार पाटीलचं. तुषार अजूनही मैदानावरती आहे. एका बाजूने किल्ला लढवतोय. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड स्वीकारला होता. त्याने चांगली फलंदाजी केली होती मागच्या सामन्यात. तो अजूनही मैदानावरती. मात्र त्याला स्ट्राईक फार कमी मिळाली. नवीन फलंदाज रोनित मडवी. यावेळी मात्र माती लावत असताना हाताला महाराष्ट्राची माती 105 हुतात्म्यानं बलिदान दिलेली ही माती संयुक्त महाराष्ट्र बाबायासाठी. तो लढा आम्ही कधी विसरू शकणार. गुड बॉलिंग. गुडलेस पारोने चेंडू टेक ऑफ केलाय. विकेट किपरने चांगलं गॅदर केलाय. डॉट डिलिव्हरी. 31 धावा 3 बास्केट आपण पाहतोय. Lovely ball indeed, pitching on the good line spot and slightly little bit moment in the air and of the surface. क्या बात आहे. अप्रतिम इंग्लिश कॉमेंट्री आपण ह्या विभागामध्ये ऐकतो ती सिद्दीक बाबे सरांच्या माध्यमातून. 31 धावा 3 बाद. ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला हा पंचा करत असताना कुणाल सर आम्हाला सिद्दीक बाबे सरांना मराठीमध्ये कॉमेंट्री करताना ऐकायचं आहे आम्हाला एखादं षटक तरी. तो दिवस लवकरच येईल. यस सिद्दीक सर. यस, बरोबर उल्लेख केले. अनिकेत पाटिल अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं. Last one was a pitching a half tracker, but just in face, in front of the batsman face. A control pull stroke all on the ground to deep mid wicket. अनिकेत पाटील वन्स अगेन 32 धावा 3 बास्केट आपण पाहतोय. ओव्हर द विकेट. लवकर खेळलाय फलंदाज. यावेळी चेंडूला पुल करत असताना सदस्य पुढे सरकलाय. पंचाच एक्झॅक्टली मागे लॉंग लेग रिझन मध्ये एकच धावता फलकावरती. चांगली गोलंदाजी. I think this is the excellent bowling so far from young man Aniket Patil. He bowled a lot of deliveries on right on the good line spot and rising delivery to batsmen. फायनल डिलिव्हरी ऑफ दिस ओव्हर. 33 धावा 3 बाद. शेवटचा चेंडू षटकातील. ओ लवकर लाईन पिक केली. व्हॉट अ शॉट. लगावच्या डोक्यावर मात्र मिस टायमिंग. दिस इज अ गुड कनेक्टिंग. सुमित झेल टिपलाय मैदानावरती आणि 4था धक्का. आतापर्यंत 4 धक्के दिलेत आणि 4ही धक्के मात्र कॉट आउट झालेत. म्हणजे कॅचच्या माध्यमातून 4ही धक्के आतापर्यंत आपण पाहतोय मैदानावरती. I think this is the change. The line in front of the batsman, juicy half volley, but not connect properly middle of the bat, straight to long off, and finally batsman on his way. What a great over turn from
Aniket Patil consider 3 runs and claim 2 important wickets. पाण्याची 4 ओवर मागणी. के लिए समय कितना लिया है? हर्षल पाटील नवीन Yes, फलंदाज. बराबर है. Yes, thank you, sir. तर 33 loss of the 4 wickets, completion of the 4 overs, such a great bowling, wonderful comeback. अनिकेत पाटीलचं षटक चांगलं राहिलं, कंटोकरूनची दाखवली मैदानावरती आणि शेवटचं षटक आता असणार मैदानावरती. 33 धावा 4 बाद नाही. 33 धावा 4 बाद देऊन मध्ये शेवटचं षटक वाजता ते 2 वाजून 53 मिनिटं. येस, कोणाल सर आता मात्र कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्या मागे एक्झॅक्टली 18 रूममध्ये. तुषार पाटील 5 वरती खेळतोय. तुषार सुरुवातीला फलंदाज आहे, मध्ये त्याला चेंडू फेस करायला फक्त 6 मिळाले आणि 6 चेंडू त्याने आतापर्यंत 5 धावा काढले सिंगलच्या माध्यमातून. त्याने एकही चौकार षटकार मारला नाही. बघायचा तो अटॅकिंग स्टान्समध्ये शेवटच्या डेट षटकांमध्ये सुजल मात्र येत असताना. Yes, in previous match, Tushar Patil is the man of the match. But I think this is the excellent bowling spell from Jack Kafroba, village bowler. First 4 overs, they contain batsmen, keep and quiet. येस, 5 वरती खेळत असताना सुरुवातीला फलंदाज जुने मैदानावरती आहे. तब्बल 22 मिनिटं केल्या मैदानावरती. 5 वरती खेळत असताना शेवटच्या षटकामध्ये फुलर अँड डिलिव्हरी याली मध्ये पुन्हा एकदा चेंडूला फक्त दिशा देत असताना शॉर्ट कव्हर रिझन मध्ये इनफिल्ड मध्ये बॅकअप चांगलं होतं. दर्शन तिथे बॅकअप देत असताना फक्त सिंगल. तुषार पाटिल भी परेशान है. सब टोटके कर चुके, सब जतन कर चुके, लेकिन रन नहीं आ रहे. जी हा सर, प्रत्येक प्रयत्न केला त्याने मैदानावरती मोठे फटके आले नाही. त्याचं कारण आहे गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरती शेतेशन देखील चांगलं झालं. मेरिटवरती गोलंदाजी झाली आणि शेतक. येस, Bowling has been terrific and fielding has been outstanding. येस, नो डाऊट. याली पुल केला चेंडूला गॅप मध्ये 1 बाउस सीमा पार. आफ्टर लॉंग टाइम वी हॅव सीन टेरिफिक शॉट फ्रॉम द बॅट्समॅन अँड दॅट्स अ 1 बाउस 4 रन्स. Very interesting bowling action of Sujal Matre. Look like right arm Paul Adam of South Africa. Look at that, goes his back foot, angling his body, pulled as ball in the gap. 1 bounce, cross the mid wicket boundary for 4. 38 धाबा धापाल करते 4 बस इथे आपण पाहतोय. एक्सलंट इंग्लिश कॉमेंट्री आपण नेहमी ऐकत असतो. मागच्या आम्ही भिवंडी 2010 ला आलो होतो आर के ट्रॉफीमध्ये. तेव्हा मला सिद्दीक बाबे सर भेटले होते. तेव्हा आमची पहिली मुलाखत झाली मुंबईला 2009 मध्ये. गोटे अंपायरला देखील आम्ही पाहिलं होतं. त्यानंतर मात्र सिद्दीक बाबे सर आम्हाला भरपूर काही शिकवलं, म्हणून त्यांना आम्ही गुरु म्हणत असतो. 38 धाबा 4 बस इथे मध्ये 4 more deliveries to go of the first inning and now 38 loss of the 4 wickets. So let's see how much target input of the opposition team. Around the wicket, full toss, बॅटचा फेस लवकर ओपन केला, गॅप केलं शोधू शकला, एकदा पुढे केले, 2 धाब्याचा मानस स्ट्रॉंग यास थ्रो चांगला दिलाय. मात्र वाईड शोधा चांगला बॅकअप. विकेट किपरच्या फक्त सिंगल. Yes, I think this is the quality fielding from Valley team, like fielder like mid wicket, long on, long off. Excellent fielding so far in a previous 4.3 overs. 39 loss of the 4 wickets, 3 more deliveries to go up. फर्स्ट इनिंग टॉस जिंकल्यानंतर तेजल दिवा कोहलीबानं डिसाईड केलं फलंदाजी करण्यासाठी. त्याने सांगितलं की आम्ही फलंदाजी करणार. मात्र निर्णय धाडसी होता. मध्ये अत्यंत चांगला निर्णय अजून परत त्यांना साबित करता. चेंडूचा पाठलाग केला, अक्षरशः एकदा मिळले 2 धाब्याचा मानस. मात्र एकच धाव फार कठीण होती. क्विकली सिंगल कंप्लीट, अ क्विक सिंगल. Still run getting not easy for Diva Kolivara, because 40 for the loss of 4 wicket. Death were 2 balls remaining. Yes, 2 more deliveries to go. Good bowling, 14 runs, loss of the 4 wickets. तुषार अजूनही नॉन स्ट्राईकला आहे. मात्र तो सुरुवातीला फलंदाज आहे. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकट ठरला. 8 चेंडू त्याने फेस केले, 7 धाबा कुठल्यात. स्ट्रायकरला हर्षल पाटील. बाउन्स डिलिव्हरी पंच सांगतील ॲब्सोल्युटली वाईट. जेपी पॅनेलचं काम देखील चांगलं झालेलं स्पर्धेमध्ये. नो कॉन्ट्रोवर्सी. चांगला अनुभव जेपी पॅनेलच्या सर्व पंचांना. आणि ते पंच आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये. याली मात्र नो बॉलचा जास्त याली बाउन्स करण्याचा प्रयत्न केला. शोल्डरचा वापर जास्त केला. गोलांची उंची देखील चांगल्या हाईटचा वापर देखील करण्याचा प्रयत्न केला मैदानावरती. आणि बाउन्स जास्त बाउन्स करण्याचा प्रयत्न केलाय. पंचाने सांगितलंय इट्स ॲब्सोल्युटली वाईट. 41 धावा झालेत मध्ये होती. मी म्हणेन फाईट टोटल झाली. फाईट करू शकतात ते 40-41 धावांवरती. कारण अतिच वातावरण आहे. दवबिंदूचं प्रमाण वाढले. 2:57 मिनिटं आणि 2 मिनिट्स टू गो ऑफ द फर्स्ट इनिंग. पुन्हा बाउन्स, पुन्हा वाईट. यस, नो बॉल.
नो बॉल. आता मात्र थोडासा मागात पडू शकेला. नो बॉल फ्री असेल. अच्छा फैसला है वहाँ पर, क्योंकि दूसरा बाउंसर है ये, और तुरंत ही रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने, क्या ये दूसरा बाउंसर है या नहीं. अगर दूसरा है, बकौल अंपायर की दूसरा बाउंसर है, एक में पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी 1 फॉर दी ओवर, और रिव्यू लिया गया है वहाँ पर, क्या दूसरा बाउंसर होगा तो फिर फ्री हिट आ जाएगा. येस. अच्छी- जास्त बाउन्स करण्याचा प्रयत्न केला. येस सिद्दीक Yes. सर. अच्छी अंपायरिंग चल रही, क्योंकि 1 फॉर दी ओवर पहली गेंद पे इशारा कर चुके थे गेंदबाज सुजल को. तीसरे अंपायर हम देखना चाहते हैं कि क्या ये दूसरा बाउंसर है. अगर है तो फिर नो बॉल रहेगा और फ्री हिट आएगा, और नहीं है, यस है, नो बॉल है, फ्री हिट आता हुआ. अच्छी अंपायरिंग. येस. गोलंदाज पुन्हा थोडासा संभ्रमात पडला. 42 धाबा. फ्रीटचा वापर केला जाईल. बघायचं 50 धाबा होऊ शकतील, आणि 50 जर झालं तर चांगली फाईट मध्ये ती होऊ शकेल मैदानावरती. मजा येईल सामन्यामध्ये. 42 लॉस ऑफ द 4 विकेट्स, 2 minutes to go and first inning. Deepak Kolibada on the toss selected bat fast. Round wicket. फुल टॉस ड्राईव्ह केला चेंडूला. यामध्ये फ्रीटचा वापर होता. एकदा मिळणार लॉंग आपला बॅकअप आहे. दुसरी धाब्याचा प्रयत्न नाही. गुड फिल्डिंग. एकच धाव. देखिए, अब वाइड यॉर्कर गेंद कराने की कोशिश करते, फील्डिंग बहुत अच्छी लगाई है उन्होंने. वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखा है. अगर वाइड यॉर्कर या वाइड ओवर पिच गेंद भी रहती है तो बल्लेबाज का शॉट वहीं जाता है. 43. खूप चांगलं विश्लेषण केलं होतं आपण. सिद्दीक बाबेचा अनुभव आहे तुमचा 28 वर्षाचा. मजा येते तुमच्या समेत कॉमेंट करण्यासाठी. अजय असतील आमचे, त्यानंतर कुणाल सर असतील. राऊंड विकेट. फायनल ड्यू द फर्स्ट इनिंग. व्हॉट अ शॉट. जस्ट पिक अप स्ट्रोक दाखवला मैदानावरती. कट करता स्क्वेअरच्या माध्यमातून उछलते गेंद को उछलता जवाब. दैट्स अ 4 रन्स. बिल्कुल पंजों पे आ गए थे. पंच किया था ऑफ साइड में. कमाल का स्ट्रोक. थंपिंग कवर ड्राइव. गोज इज बैक फुट एंड हैमर्ड दैट बॉल. वन बाउंस थ्रू द कवर्स फॉर 4. रिव्ह्यू मात्र फलंदाजाने स्वीकारला. रिव्ह्यू घेतलाय. यस, जाते जाते अगर आपके जेब में कूपन रहा है तो फिर उसको इस्तेमाल क्यों ना किया जाए. येस. ये देखिए किस प्रकार रहा ये, कशा रीतीने राहिलाय चेंडू बघा. फलंदाज बॅकफुटला आला. बाउन्स होता की चेक केला जाईल, आणि चेंडू बघा हो थोडी उंची वाटते, कारण चेंडू टोवरती केलाय फलंदाजानं. आणि फेअर डिलिव्हरी. येस, Yes. ॲब्सोल्युटली फेअर डिलिव्हरी. आणि सत्र संपले. सिद्दीक सर 47 आणि जिंकण्यासाठी 48 इज टार्गेट. 48 धावांचं लक्ष्य मैदानावरती. यस, चलते अजय गरत के पास. अजय गरत आज हमारे बीच मच्छिंदर पाटिल, वॉइस ऑफ अजय गरत जा चुके हैं. ये मच्छिंदर पाटिल साहब का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे. वेल डन मच्छिंदर पाटिल. राइगर की तोप यहाँ पर 2 दिन तक, 2 रात तक धाड़ी. भूमि इंटरप्राइजेज स्टैंड में जो गेंद गई है, अगर मिले किसी को तो प्लीज हमें वापस कर दे. चलते हैं मच्छिंदर पाटिल के सत्कार की तरफ. यस कुणाल. तर आमच्या बरोबर गेल्या 2 रात्रीमध्ये तुम्ही समालोचन ऐकलं. तर रायगडची बुलंद तोफ मच्छिंद्र पाटील सर यांचा सन्मान इथे कुमार पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये इथे केला जातोय. निलेश पाटील यांचे बंधू कुमार पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये रायगडची बुलंद तोफ मच्छिंद्र पाटील यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर
या A1 जोडीच्या शोमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषकामध्ये त्यांचा सन्मान इथे होतोय. खूप खूप धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर, आपला अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात, वेळातला वेळ काढून या स्पर्धेसाठी तुम्ही आलात आणि खूप चांगलं समालोचन गेल्या 2 रात्रीमध्ये त्यांचं तुम्ही ऐकलं. आता जाऊया पुन्हा एकदा शेवटच्या या सत्राकडे. आता या मॅचच्या दुसरं सत्र सुरू होतंय, लक्ष देखील सेट झालंय आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया पुन्हा एकदा सिद्दीक भावे सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद कुणाल दाते सर, धन्यवाद मच्छिंद्र जी, एंड शुभ रात्रि, शब खैर. रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे. दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए अड़तालीस का लक्ष्य रखा है. जय काफड़ोबा वेले के सामने. गुड नाइट मिस्टर IPL सर कुणाल दाते एंड राइगर्स तो मच्छिंद्र पाटिल जी. कल ठीक 9 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है. 9:15 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएंगी. Back to cricket now. 2 openers on the middle. अक्षय पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है. देखिए, इस तरह के जो लक्ष्य रहते हैं वो बल्लेबाज को कभी कभी दुविधा में डाल देते हैं. बड़े शॉट के लिए जाएं, सिंगल डबल के लिए जाए और बातों बातों में मैच फंस जाता है. आज के मैचेस बहुत ही रोमांचक रहे, बहुत ही कट टू कट रहे. खेल की शुरुआत होती हुई अक्षय पाटिल. भावेश पाटिल और कुलदीप थले. कुलदीप थले कमाल के ऑलराउंडर है, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की. भावेश पाटिल पहली गेंद के साथ. ओह, अक्षय पाटिल की ज़बरदस्त गेंद भावेश पाटिल को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. अक्षय पाटिल भावेश पाटिल के लिए ऊंचा बाउंसर कट करने की कोशिश. अंपायर ने वाइड घोषित किया. बल्लेबाज के रीच के बाहर था. बढ़िया निर्णय. उमी को पता था ये सही निर्णय है. ये देखिए, बल्लेबाज के रीच के बाहर था. जंप करके खेलना चाहते थे. 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा करते हुए अंपायर. ये आज मध्य रात्रि का आखिरी मुकाबला चल रहा है. अक्षय पाटिल आगे रखी हुई गेंद, बहुत ही दिलकश ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से. वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन. आहे तो डॅशिंग आहे वो कर्तबदार साहेब आमचे आहे तो डॅशिंग आहे वो कर्तबदार. गजब का स्ट्रोक, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को 30 गज के दायरे के ऊपर से. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, रिवायती पावर प्ले शॉट. 4 रन. खाता खुला भावेश का. वेले का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के 48 के लक्ष्य का पीछा कर रही है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 के अंदर है. लेकिन मध्य रात्रि के बाद का मैच है, इसलिए ये टोटल भी कभी इतने आसान नहीं होते. A1 जोड़ी की खास बात ये रही है कि उनके इस टूर्नामेंट के मैचेस बहुत कट टू कट. अच्छी वापसी, तीखा जवाब दिया वहाँ पर. वाइड यॉर्कर, लेट रिवेट रहा था बल्लेबाज का. नॉन स्ट्राइकर से थले ने कहा सब कुछ ठीक है, आप खेलिए, रिव्यू बचाना है.
अक्षय पाटिल, इस मरतबा एज लगा है लेकिन खतरा नहीं है। एक रन आता हुआ, बल्ली की जड़ से गेंद लगी थी। भावेश पाटिल पहुंचे 5 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 6 रन बिना किसी विकेट के। अब कुलदीप थले सामना करने जा रहे हैं। बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही थी कुलदीप की। अक्षय पाटिल का 2 और 11 रन और 2 विकेट लिए थे। खड़े खड़े खेला है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, शून्य का चश्मा पहन के डगआउट जाते हुए कुलदीप थले। कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा होतो दिल्लीत जय जयकार. कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा महाराष्ट्रात जय जयकार. कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा होतो दिल्लीत जय जयकार. कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा महाराष्ट्रात जय जयकार. जो विकेट चाहिए थी वो विकेट तेजल 11 दीवा कोलीवाड़ा ने हासिल की है। दूर से खेला था ऑन द राइज, सर आसमान में, गेंद आसमान में, आउट होके चले गए बैटर कुलदीप थले। नए बैटर मैदान में आते हुए नए बैटर अनिकेत पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं। विकेट तो बहुत बड़ा हासिल कर लिया है अक्षय पाटिल ने। हालांकि काफरोबा वेले के पास बहुत गहराई तक बल्लेबाजी भी है, लेकिन बॉलिंग अटैक दीवा कोलीवाड़ा का भी बहुत ही पहनापन है। बहुत ही अनुशासन भरी हुई गेंदबाजी है। अक्षय पाटिल लॉन्ग ऑफ को थोड़ा वाइडिश रखा है, मिड ऑन स्ट्रेटिश है। अक्षय चले, अनिकेत को लूज स्ट्रोक है, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि सर्कल में कोई खिलाड़ी नहीं। यहां पर खराब फील्डिंग, जहां 1 रन था वहां 2 रन ले लिए। गेंदबाज कह रहे हैं बल्लेबाजों से कि चुरा लिया है तुमने जो रन को। 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 8, विकेट गिरा है 1। बचे हुए 4 ओवर में यहाँ से एग्जैक्टली 40 रन चाहिए वेले टीम को मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि 9 विकेट हाथ में और इस तरह के इक्वेशन में 1-2 बड़े शॉट अगर आ गए तो मैच का पलड़ा झुक जाएगा वेले की तरफ। 1-2 विकेट आ गए तो मैच बराबरी पे चलेगा। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से अब मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज चंद्रकांत पाटिल को। पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे चंद्रकांत। सामना करेंगे बैटर भावेश पाटिल। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन, दूसरा P2 चलता हुआ पावर प्ले 2। ओह बढ़िया गेंद, कटर, वो भी आगे से घुमाया था बल्लेबाज के। यही कारण था बल्लेबाज ना आगे हो पाए ना पीछे हो पाए। इससे पहले वो कुछ करते, गेंद उनके बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंद, स्वीप लगाने की कोशिश, फिर गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई। चंद्रकांत, अच्छी गेंद, फिर छटाया है। 3 डॉट गेंदे, शोर उभरता हुआ।
कुछ सपोर्टर्स दीवा कोलीवाड़ा के भुंगू बाजा के साथ हमारे बीच में है। भारत पाकिस्तान के मैचेस में अक्सर जो इनिशियल मैचेस हुए थे शारजा में, जब ये भोंगू बाजा काफ़ी सुनाई देता था। चंद्रकांत 3 अच्छी गेंदें की है, 3 डॉट गेंदें दबाव बढ़ाती हुई भावेश पाटिल पे, लेकिन पलटवार कर सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर अब की बार वाइड, थोड़ा तेज भी किया था परिवर्तन के तौर पे। 9 पे पहुंचा स्कोर। वेले का ज्यादा तेज करने की कोशिश में अपने लाइन से भटके थे चंद्रकांत पाटिल। बैकफुट पे गए, पंच किया, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, तेज आउटफील्ड, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। तीसरे के लिए पलट चुके हैं और 3 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज भावेश पाटिल। इन 3 रन से स्कोर 12 पे पहुंचा है। 48 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 12 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चंद्रकांत पाटिल सुई जीत की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, अंपायर का लेग बाय का इशारा। रन कैसे आ रहे ये जरूरी नहीं, रन का आना जरूरी है। ये कोई नहीं देखता है कि पेमेंट फोन पे से आ रहा है या गूगल पे से। 1 रन से स्कोर 13 पे पहुंचा है। ये मुकाबला भी अब धीरे धीरे फंसता जा रहा है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। चंद्रकांत इस मरतबा ऑफिस टॉस खेला है, कोशिश थी वहां पर, बहुत बढ़िया बैकअप, लेकिन नहीं रोक पाए बैट्समैन को 2 रन लेने से। ओवर समाप्त होते हुए 2 रन बने, 15, नेक टू नेट फाइट चल रही है। ओवर बचे 3 और रन चाहिए 33। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट ऊपर जाता हुआ, फील्डिंग तुरंत सजाना है। आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाक निलेश पाटील आहे वन जोडीनी। कपिल पाटील साहेबांचं झालंय आगमन क्रिकेटच्या या पंढरीत। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है। साहिल नाइक को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले मैच में साहिल नाइक ने कमाल की बॉलिंग की थी। दीवा कोलीवाड़ा बड़ा नाम है, हालांकि पिछले केंद्रीय मंत्री चषक में वेले की टीम ने ही हालांकि पिछले साल भी वेली की टीम जरूर टकराई थी, जिसको शिकस्त दी थी दीवा कोलीवाड़ा ने, और रनर्स अप है पिछले केंद्रीय मंत्री की बॉल आउट में बामन डोंगरी के सामने। खेल की शुरुआत पानी पीने के बाद बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे दर्शक, यस, अलग ही इंजॉयमेंट है ये। साहिल नाइक ये सबसे अच्छे गेंदबाज हैं तेजल 11 दीवा कोलीवाड़ा के। सामना करेंगे उनका बैटर, पहले पानी पिलाया फिर बल्ला बदला, क्या किस्मत बदलेंगी। अनिकेत पाटिल
सामना कर रहे हैं। दोनों टीमें, अब दोनों टीमों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समय में दोनों टीमों को वार्निंग दी जा रही एवन जोड़ी की तरफ से। दोनों टीमों को अब वार्न किया जा रहा है। विकेट कीपर तुषार पाटिल, खेल की शुरुआत होती हुई साहिल नाइक को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे अनिकेत पाटिल। 33 रन चाहिए 3 ओवर में। साइन नाइक सामना करेंगे अनिकेत पाटिल। तुषार पाटिल आपको वार्न किया जा रहा है। नॉन पावर प्ले चलता हुआ शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, कवर और मिड ऑफ सर्कल में दूर से खेलने की कोशिश ऑन द राइज। वाइड घोषित के अंपायर ने 1 रन और आता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है। साइन नाइक आज के तमाम मैचेस कट टू कट गए हैं, फोटो फिनिश। इस मरतबा केवल अपर कट किया है, पीछे डीप पॉइंट रखा गया है। एक बात है कि गेंद अगर पीछे जा रही है तो बल्लेबाज तेज 2 रन ले रहे। वेले का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट, लक्ष्य 48 का। अभी भी वेले टीम के काफी समर्थक हमारे साथ हैं और दीवा कोलीवाड़ा के भी समर्थक सामने नजर आ रहे। उछाल दिया है सीधा डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं। तीर की मानिंद गेंद निकलती हुई 4 रन। यॉर्कर गेंद अगर जगह पे नहीं गिरी तो आश्रय ही होता है। यॉर्कर भी 2 धारी तलवार है, अगर परफेक्ट गिर गई तो ठीक, नहीं तो उस पर रन आते। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइट। रेस का घोड़ा अगर रेस के दिन नहीं दौड़े तो मालिक नुकसान उठाता है। वहीं कुछ कहानी साहिल नाइक के साथ चलती भी। अब 23 पे पहुंचा स्कोर, यहां से 25 रन और चाहिए। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे। तेज गेंद आई थी, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन आता हुआ स्कोर में 24 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 गेंदें बची और 24 रन चाहिए। जीटीसी ने कमाल के स्टैटिक्स, कमाल का मैच कंपैरिजन, कमाल की समरी दिखाई है। साइन नाइक सामना करेंगे भावेश पाटिल। एक चौका जड़ चुके हैं। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर को किया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे भेजा है। लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा खड़ा है। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में एक लंबा फासला। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया बैकवर्ड पॉइंट पे, 1 रन। अच्छी सोच की बल्लेबाजी।
एक रन से 25 पे पहुंचा है स्कोर, 25 ऑन बोर्ड, 25 रन, 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल, सामना करेंगे अनिकेत पाटिल। एक ही विकेट गिरा है वेले का, ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर बीट हुए, रन पूरा। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, एक गेंद बाकी है, 1 टू गो। छब्बीस रन बने। अभी भी मैच मेरा मानना है कि बराबरी पे है, क्योंकि यहां से 19 रन और चाहिए। 26 बने ना। इस मर्तबा पिकअप शॉट है, क्या गजब का स्ट्रोक है, भिंगड़ी 6 रन। कितीही महारथियाला तरी आयोजन नाही असं करायचं, कोणी कितीही महारथियाला तरी बरोबरी नाही करायचं। आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडी। इसे कहते हैं एक मारा बाकी सॉलिड मारा। फ्रंट फुट को आगे करके पिकअप शॉट खेला था, 6 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 32। ओवर बचे हैं 2 और रन चाहिए 16। इस सिक्सर ने थोड़ा सा पड़ला झुका दिया वेले टीम के तरफ, लेकिन देखना है कि बॉलिंग में चंद्रकांत पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गजब का पिकअप शॉट खेला था भावेश पाटिल ने, कोई तस्वुर नहीं कर सकता है कि मैदान में रात के 3:24 पर अभी भी 300 से 400 ऑडियंस मौजूद है। खेल की शुरुआत होती भी चंद्रकांत और लगभग 600 लोग YouTube पे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत पाटिल सामना करेंगे अनिकेत पाटिल। 12 गेंदे 16 रन। विकेटें काफ़ी हाथ में, जब आपके हाथ में विकेटें रहते हैं तो बल्लेबाज रिस्क लेते हैं। चंद्रकांत पाटिल पिछला ओवर बहुत कसा हुआ किया था। पहली गेंद बोल्ड, कमाल की गेंद, जड़ में थी और स्टंप्स को जड़ से उखाड़ दिया। विकेट नंबर 2। ग्यारह गेंदे 16 रन। नए बैटर बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए विराज पाटिल। विराज का क्या राज रहेगा? क्या चंद्रकांत कसम खाएंगे कि दूर नहीं जाएंगे चंद्रयान की यात्रा पे? 11 गेंदे 16 रन। फिर एक कट टू कट मुकाबला रंग बढ़ता हुआ केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज कप में। फिर महाराष्ट्र की एवन जोड़ी हिट होती हुई। पूरे मैचेस हम देखते हैं जो हुए हैं,
उसमें से 80% मैचेस आखिरी गेंद तक गए हैं और बहुत कट टू कट फोटो फिनिश गए। विराज पाटिल सामना कर रहे हैं चंद्रकांत पाटिल का। एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग घेरे के अंदर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और कवर पीछे। स्विंग करने की कोशिश, शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन से खाता खुला विराज पाटिल का। कुल स्कोर 33। 10 गेंदे 15 रन। फिर और एक मुकाबला थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने की तैयारी में। चंद्रकांत पाटिल, भावेश पाटिल कमाल की बल्लेबाजी की है। ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी, कमाल का गैदर किया तुषार पाटिल ने विकेटों के पीछे। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत ही घातक गेंदबाज हैं चंद्रकांत पाटिल। वेले टीम के डगआउट में इस वक्त थोड़ी सी हलचल है। 9 गेंदे 15 रन। एक एक गेंद सोने के टुकड़े के बराबर है और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, कीमत कम नहीं होती। फिर अच्छी गेंद, पुश किया, यहां पे रनआउट हो जाएंगे। विराज पाटिल ने अपना विकेट बलिदान किया है भावेश पाटिल के लिए। सरपंचाचे राज्यमंत्री त्यांनी पद हे भूषविले, पंचायत समिती सभापती विराजमान होऊन गेले। पुरुषोत्तम पाटील बंधू त्यांचा आहे हो त्यांची साथ। 8 गेंदे और 15 रन। सरदर्द बढ़ता हुआ वेले टीम का। नए बैटर इस वक्त पिच पे आते हुए दर्शन पाटिल। दर्शन पाटिल को बाउंड्री के दर्शन कराने होंगे, चंद्रकांत को चंद्रयान के दर्शन कराने होंगे, क्योंकि 8 गेंदों में 15 रन चाहिए। सबसे बड़ी ये सीजन का जो महाराष्ट्र की एवन जूरी का शो है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैचेस बहुत रोमांचक हुए हैं। हर टीम जिद्दी क्रिकेट खेल रही है। 8 गेंदे 15 रन। स्विच हिट की कोशिश, फील्डर हैं बैकवर्ड पॉइंट पे। 1 रन। 7 गेंदे 14 रन। व्हाट अ मैच! क्या मुकाबला हो रहा है। कल दोस्तों आपके साथ रहेंगे सुबह में वॉइस ऑफ कामन हेमंत पाटिल, वॉइस ऑफ जुन नांदुर की समीर ठाकरे एंड वॉइस ऑफ मुरबार सुनील शिल्के एंड वॉइस ऑफ नवी मुंबई। बढ़िया गेंद, फिर स्पिन हुई। क्या ओवर किया है चंद्रकांत पाटिल ने। 2 ओवर में कितने दिए? 8 रन दिए और 1 विकेट। कमाल की बॉलिंग। अब 1 ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 14। क्या मुकाबला है। पहले दूसरे ओवर में लगा कि वेले टीम आसानी से जीतेंगी। देखिए क्रिकेट में चीजें बहुत जल्दी बदल जाती। आपका नसीब भले से देर से बदले। 1 ओवर 14 रन, चेसिंग कंपलसरी। पिछला मैच वाडेगर बहुत कम मार्जिन में हार गई। अब चार्ज हो चुकी है तेजल 11, दीवा कोलीवाड़ा। डेथ ओवर में मोर्चे पे लगाया गया है सोहम पवार को। ये मुकाबला सोहम पवार बनाम काफड़ोबा स्पोर्ट्स वेले के बीच में हो रहा है। वेले के
डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा है, लेकिन इस तरह के जो मैचेस है वेले ने इससे पहले भी खेले हैं। दबाव की स्थिति में है क्षमता दोनों बल्लेबाज, स्पेशली भावेश एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं। खेल की शुरुआत करना है सोहम पवार। माना कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है, लेकिन समय किसके लिए नहीं रुकता है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। सोहम की गेंद, आगे रखी भी गेंद थी, ड्राइव किया मिड विकेट पे, 1 रन बना, मना किया। स्ट्राइक हालांकि भावेश पाटिल के पास है। 5 गेंदे 13 रन। ठंडी में गर्मी का एहसास, हॉट मैच। ये खिलाड़ी खास है भावेश पाटिल, ये कारनामा अंजाम दे सकता है। लेकिन बॉलिंग जो गेंदबाजी के लिए आए हैं सोहम पवार, मेरे ख्याल से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं। भावेश पाटिल नजरें जमी हुई पूरी वेले की। भावेश पे क्षमता भी है, टैलेंट भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल! भावेश इज गॉन। शब्द पाळणारा, विकास काम करणारा, नेता आहे तो डॅशिंग दमदार, नेता आहे तो डॅशिंग दमदार. यही कहा था मैंने कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है, और इस तरह की कंडीशन में देर रात इस तरह के गेंदबाजों के सामने रन बनाना थोड़ा कठिन रहता है। गेंदबाज गलती कर बैठे तो अलग बात है। 4 गेंदे 13 रन। नए बैटर मैदान में धनराज। धन को रन राज करना होगा, धनराज को रन राज करना होगा। धनराज बल्लेबाजी को आए हैं। आज वेले के लिए उनको वाह ताज नहीं, वाह धनराज बनना होगा। ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी को इस समय खेलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन शॉट्स उन पे भी आ सकते हैं। ये देखिए फिर अच्छी गेंद, 1 रन, लेग बाय। गेंदे बची है 3, रन चाहिए 12। व्हाट अ मैच! एक सिक्सर अगर आया ना तो सिद्धि विनायक अंजूर क्रिकेट ग्राउंड पे जितनी ठंडी है वो 100 डिग्री में चली जाएंगी। दर्शक तो यही चाहते हैं, दर्शक कट टू कट मैचेस चाहते हैं, लेकिन दीवा कोलीवाड़ा नहीं चाहेंगी। सामना करेंगे बैटर दर्शन पाटिल। दर्शन को अब गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन करना होंगे, अथवा ये मैच लगभग फिर मुश्किल हो जाएगा। 3-12। फिर ऑर्थोडॉक्स कमाल की बॉलिंग। अब एक ही चारा, हिट आउट और गेट आउट, 2 में 2 ठोक डालने होंगे। 2 गेंदे 12 रन। क्या बॉलिंग की है छोटे टोटल पे दीवा कोलीवाड़ा ने। लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। कई टीमों को हमने किनारे पे डूबते देखा है। कश्तियां उनकी भी डूबती है जो किनारे पे खड़ी है जब तूफान आता है तो, और कश्तियां वो भी डूबती है जो मझदार में है। 2-12। कमाल की बॉलिंग सोहम पवार। डॉट गेंद, जश्न शुरू दीवा कोलीवाड़ा का। बाएं तरफ भी बहुत है भूमि इंटरप्राइजेस में, और पुरुषोत्तम पाटिल स्टैंड में भी बहुत नजर आ रहे हैं।
पिछले साल वडावली बी का इसी समय यही हश्र किया था। 24-22 का इक्वेशन था वो। ओमी केनी बहुत खुश। स्वाम इसके वाइट, लेकिन एक का 11 का इक्वेशन है। वाइट के लिए तुरंत ही रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने। लगता है कि नतीजा आने की तैयारी में है। फेयर डिलीवरी, दीवा कोलीवाड़ा विजयी। कॉन्ग्रेचुलेशन ओमी केनियन ऑल टीम। हार्ड लक वेले। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। 2 ओवर 8 रन और 1 विकेट। चंद्रकांत पाटिल आपको आना है मैन ऑफ द मैच। आइए चंद्रकांत पाटिल। कॉन्ग्रेचुलेशन ओमी केनी एंड ऑल टीम। हार्ड लक वेले। हालांकि वेले ने गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की और पहले बल्लेबाजी भी अच्छी हुई थी, लेकिन क्रिकेट है, वेले टीम को भी सलाम है। अच्छा क्रिकेट खेला आपने। चंद्रकांत चला रे बाबा, इचारान जिंदगी खपली, आवड भूमी लागले तवर सुकट खपली। आइए कुणाल तारे साहब के हाथों से पहले ये वेलकम। पहले मिडल पिनार हैं एवन नीलेश पाटिल साहब। दीपक सेठ आपको, यस दीपक सेठ की टीम है। क्या बात है दीपक सेठ। इसे कहते हैं कि तेजल 11। इसे कहते हैं कि सर कढ़ाई में और 5 उंगलियां घी में। उन्हीं की तरफ से ये ट्रॉफी दी जा रही है। कुणाल साहब की तरफ से हम एक कैप दे रहे हैं, कुणाल तरे, और कट पीस भी देना है सर आपको। चंद्रकांत वेलकम है। नहीं बोल तो काय ते बोल। चंद्रकांत एकच गोष्ट चाल बोल। मॅच जिंकले बोल, तुझ्या मनात काय करतो। खूप आनंद झालाय मला आता। हाँ ये बोतला ना तूने। ये थे चंद्रकांत। इनकी एक गेंद को भी बल्लेबाज चंद्रयान की तरफ नहीं भेज पाए। तो आज का शेड्यूल होता है यही खत्म। कल ठीक 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ्रेश आइए।